So let's start our today class. Today class is the lab session 6, and here we will design a full wave bridge rectifier. And this is the most common used rectifier in the electronic circuits. Either in power supplies, we generally use the bridge rectifier. The bridge rectifier इसको हम ब्रिज रेक्टिफायर क्यों कहते हैं? Because it contains 4 diodes and they are connected in the form of a bridge. So therefore this is called bridge rectifier. And you may know the shape. This shape is called bridge shape. If you have studied some bridges, and the simplest bridge is Wheatstone bridge. So in Wheatstone bridge you may see that there are 4 resistors and they are connected in such a manner. So here the diodes are connected in such a manner, therefore they are called bridge. And it is also in this bridge is balance or not, you may know in your previous works. So but here we say that they are connected in the form of bridge, so therefore this is called bridge rectifier. So the bridge rectifier use 4 diodes connected in bridge form as shown in the figure 220. This is D1, this is D2, this is D3, and this is D4. D1 is opposite D2, D3, and D4. And this is the resistance. And this is the load resistance, and you may know that these are connected. In some books you can study that this is in this form. So in some books you can see that this is connected in this form, and this form and this form are same. So let's consider this is our input voltage, and we want to rectify this input voltage, and this is the transformer. And you know that what is the purpose of transformer? There are 2 purposes of transformer. One is that it isolates the input circuit from the output circuit, and the second is that it steps down the voltage to a specific level. So consider the positive cycle. This is the positive cycle. In positive cycle, you may know this is positive and this is negative. This portion is positive and this portion is negative. So here the current will be flow in this direction. When current reach here, so you know that this is the p-type portion and this is the n-type. This is the anode and this is the cathode. So the anode is connected to the positive and the cathode is connected to the negative. You may know here.
or the anode is more positive with respect to cathode. So this will be on, and here it is connected to the positive, more positive, and this is less positive, so this will be off. So the current will be flow in this direction. Here you know that this is also reverse bias, so the current will be flow in this direction, and then they will come here. But here the current will not flow here. Why? As you know that this portion is more positive as compared to this, so this is open circuit, and you know that this portion is connected to the negative terminal, and this he will connect to some positive terminal after some drop. So this is a forward bias, so the current will be flow in this direction. The current will be flow in this direction. This is the flow direction, and you know that the current in load resistance from up to down, so this is the output. When it become when there's a negative cycle, when there's a negative cycle, consider this portion, consider this portion. Here this is negative, this is positive, this is negative, this is positive. Now the positive terminal is connected here, so the current will be flow in this direction. You know that the positive is connected to cathode, so this is off, and the positive is connected to anode, so this is on, and the current again will be flow from up to down, here from up to down and here from up to down. So that is why it doesn't change the direction, it doesn't change the direction, and the current will be flow here. You know that this is already up, the current will be flow here. Now you know that this is negative, more negative, and this is less positive, so it means that this is up, the current will be flow in this direction. But whatever the direction is, but the current and the load resistance must be from up to down, from up to down. So in load resistor the current direction doesn't change. It means that this circuit convert the AC circuit in AC voltage into DC, and both the current and the voltage direction is same, so that is why we draw here. So here this is a one cycle, and here these are two cycle. Why this is two cycle? You know that the cycle हमारे साथ वो पोर्शन होते हैं जिसके बाद वो अपने आप को रिपीट करता है. So हमारे साथ इधर क्या होता है इधर हमारे साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बाद दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसके बाद अपने आप को रिपीट करते हैं. इधर देखिए, इधर इसके बाद हमारे साथ ये है, इस और इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है. इसका मतलब ये अलग साइकिल, ये अलग साइकिल. साइकिल का मतलब ये है कि इसमें टू कंपोनेंट होगी, एक साथ जिस तरह भी हो, एक साथ ये भी एक साइकिल है. ये देखिए, अंदर के साथ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइकिल है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये साइकिल. अगर आप ये नहीं इससे समझ नहीं आती तब साथ साटूत में अगर कंसिडर करें इस तरह, इसमें ये शेप सेम है. इसके मतलब है कि इसके बाद ये आ रहा है. दिस इज वन साइकिल, दिस इज अनदर साइकिल, दिस इज अनदर साइकिल. साइकिल का मतलब होता है एक सेम शेप का रिपीटिशन. ठीक है, समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? यस सर. ठीक है, कहने का मतलब ये था कि इधर अगर एक साइकिल है तो इधर दो साइकिल है, इधर अगर 5 साइकिल है तो इधर 10 साइकिल है. कहने का मतलब ये है कि इधर अगर फ्रीक्वेंसी f है तो इधर इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 2f. फ्रीक्वेंसी विल बी डबल. इन ब्रिज रेक्टिफायर and full wave rectifier
and also in center tape, and either this is center tape, either this is bridge rectifier, the frequency of the input cycle, the frequency of the output of the bridge rectifier will be double from the input frequency. ये आपको शायद क्लियर होगा कि मैं जो भी कह रहा हूँ, ठीक है। सो ये आपके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव था। सो कहने का मतलब अगर पॉजिटिव साइकिल है तो डायोड D1 और D2 ऑन है, अगर नेगेटिव साइकिल है तो D3 और D4 आपके साथ ऑन है। लेकिन दोनों डायरेक्शन में करंट की जो डायरेक्शन है, वोल्टेज की डायरेक्शन है, रेजिस्टेंस में, रजिस्टर में वो सेम होगा। अभी इसमें हम पढ़ते हैं दो पैरामीटर्स। वन इज आउटपुट वोल्टेज, इसका आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, और इसका एक PIV वैल्यू, इसका PIV वैल्यू क्या होगा। तो अगर आप आउटपुट वोल्टेज देखना चाहते हैं तो अप्लाई KVL। अगर आप अप्लाई KVL करें इधर, तो हम दो तरीकों से कर सकते हैं। इफ वी कंसीडर द डायोड इज आइडियल मॉडल, अगर हम इसको आइडियल मॉडल कंसीडर करें तो फिर हमारे साथ ये अब साथ इस तरह हो जाएगा। अगर मैं इसको कर दो अपना वाइट बोर्ड पे, ठीक है। ये देखिए हमारे साथ था, दिस इज डायोड D, इस तरह था। ठीक बना दिया ना, डायोड D1, डायोड D2, डायोड D3, डायोड D4। और अगर रजिस्टर में इधर कंसिडर करो फिर भी कोई बात नहीं है। और अगर आपको ये अच्छी नहीं लगी, चलो मैं इधर नहीं लिखूँ, मैं वही इधर रजिस्टर बनाया। They are connected. This is the V secondary voltage, the output of the transformer. So you may know the current direction if this is positive and this is negative. So the current direction is this. करंट इधर आ जाएगा, बाद करंट इधर आ जाएगा, इसके 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 बाद करंट इधर आ जाएगा, और ये आपको रिपीट कर दो। कहने का मतलब है कि ये दिस पोर्शन is R, this is R. So what is the output voltage? Voltage across this is V out. VO mean V out, VS mean V secondary। फिर इसके बाद अपनी बुक की जो भी अंदाज से उसने लिखी है फिर वही बेस में हम एडजस्ट करेंगे। अभी इफ दिस इज आइडियल, अगर ये आइडियल है तो आप क्या करें, आप सपोज करें कि ये जो डायोड है ये आपके साथ के ओपन सर्किट, और ये भी ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब ये कि आपके साथ इस तरह ओपन है, ठीक है। ये डायोड आपके साथ इस तरह ओपन है, and these are short circuits। What is mean by short circuit? शॉर्ट सर्किट का मतलब ये इस तरह आई है, क्योंकि आइडियल केस में आपके साथ ये शॉर्ट सर्किट बनते हैं, ठीक है। और ये दोनों क्या होगा, ओपन सर्किट। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, इस पर केवीएल अप्लाई करता हूँ यहाँ से लेकर माइनस से प्लस, ये आपके साथ राइज है तो वी सेकेंडरी इज इक्वल टू, आप जिस तरह भी करते हैं, आपका अपना मैथमेटिक्स है, मुझे पता नहीं आप कैसे करते हैं। मैं इस तरह करता हूँ कि राइज एक डायरेक्शन फिर और ड्रॉप डायरेक्शन में। इधर देखिए, इधर कोई ड्रॉप नहीं होता क्योंकि शॉर्ट सर्किट है, इधर आपके साथ ड्रॉप है
प्लस से माइनस ड्रॉप है, दिस इक्वल टू वी आउट। इधर देखिए आ जाएगा, इधर इधर कोई नहीं है ना, तो वी सेकंड इज इक्वल टू वी आउट। अगर आइडियल केस, अगर आइडियल केस नहीं है, हमारे साथ इधर डायोड आप सपोज करें, तो हमारे साथ ये डायोड ऑन है, और इस डायोड की अक्रॉस वोल्टेज कितनी होती है 0.7, और एक डायोड हमारे साथ ये ऑन है, इसकी अक्रॉस वोल्टेज कितनी होती है 0.7, और ये आपके साथ वैसी ओपन है। तो फिर यहाँ से लेकर माइनस या प्लस वी सेकेंडरी इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा, तो ये एक साथ एक ड्रॉप है 0.7 वोल्ट ड्रॉप है, तो 0.7 लिख ली। इधर आ जाएगा ये आपके साथ के वी आउट, वी आउट यहाँ से आ जाएगा इधर, फिर एक साथ 0.7, 0.7 इधर आपके साथ दोबारा आ जाएगा। कहने का मतलब है कि वी सेकेंडरी आपके साथ हो जाएगा किसके बराबर, वी आउट प्लस 0.7, 0.7 1.4। अगर आप वी आउट फाइंड करना चाहते हैं तो वी आउट इज इक्वल टू वी सेकेंडरी माइनस 0.7, वी सेकेंडरी 0.7 ये आ जाएगा, 0.7 1.4, सॉरी 1.4, क्योंकि इस डायरेक्शन पे शिफ्ट है। सो ये आपके साथ वी आउट की वैल्यू आ गया। अगर आपकी आइडियल है तो आपके साथ वी आउट इज इक्वल टू वी सेकेंडरी, अगर आपके साथ आइडियल नहीं है तो वी आउट इज इक्वल टू वी एस माइनस वी सेकेंडरी माइनस 1.4, ये आपके साथ आ जाएगा। ठीक, दूसरा ये है कि ये तो आपके साथ अभी आउट रही है। अगर मैं इसका क्या फाइंड करना चाहता हूँ, अगर मैं इसका पी आई वी वैल्यू फाइंड करना चाहता हूँ, तो ये मेरे साथ एक डायोड आ गया, ठीक है। इधर मैं एक रजिस्टर अगर लगा दी तो सैंपल आ जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज अवेलेबल है, वी सेकेंडरी। जब डायोड पॉजिटिव से करें तो करंट इधर आ जाएगा, के बाद करंट इधर आ जाएगा यहाँ तक, इसके बाद करंट इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, उसके बाद दोबारा इधर नहीं जाएगा बल्कि इधर आ जाएगा, इधर आ गया तो इसका मतलब इधर आ जाएगा, इस पॉइंट पे करंट इधर आ जाएगा, और ये पोर्शन आपके साथ ओपन हो जाएंगे। इसको मैं भी दोबारा से बनाया था, ठीक है। इधर डायोड था ना, इधर ये आपके साथ ओपन सर्किट आ गया, इधर डायोड था ना, ये आपके साथ ओपन सर्किट आ गया, ठीक है। वही सर्किट जो अभी मैं बना रहा, अभी इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि ये के साथ हाई वोल्टेज पॉजिटिव इधर अवेलेबल है, नेगेटिव वोल्टेज इधर अवेलेबल है, ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय पी आई वी वैल्यू, आपको मालूम है कि पी आई वी का मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज, और ये कौन सी वोल्टेज है, ये आपके साथ डायोड रिवर्स बायस हो। सो इधर डायोड आपके साथ रिवर्स बायस है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, पी आई वी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या होगा, पी आई वी। इफ आई कंसीडर दिस लूप, अगर मैं इस लूप को कंसीडर करूँ, इस लूप, ठीक है, तो माइनस से राइज हो जाएगा, एक साथ 0.7 ड्रॉप हो जाएगा, और एक साथ ये भी आउट होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज वो भी आउट है ना। सो
यहाँ से मैंने स्टार्ट कर दिया माइनस या प्लस, तो मैंने लिख लिया PIV, क्योंकि इसकी जो क्रॉस वोल्टेज है वो PIV के बराबर। एक ड्रॉप आपके साथ किया 0.7 और एक ड्रॉप आपके साथ किया V आउट, तो आप लिख ली V आउट। V आउट प्लस 0.7, ये आपके साथ PIV वैल्यू होगा इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ V आउट। अगर आप इसको इन द फॉर्म ऑफ P सेकेंडरी लिखना चाहते हैं, ठीक है, शायद आपकी बुक ने नहीं लिखा हो, मेरी लैब्स ने भी नहीं लिखा हो, लेकिन अगर आपने लिखना है तो अभी मैंने एक प्रूफ्स कर दिया। V आउट अक्सर किसी के बराबर था, V सेकेंडरी माइनस 1.4, इसकी जगह आप लिख ली V secondary minus 1.4 plus 0.7 के साथ आ जाएगा V secondary minus 0.7। इन द फॉर्म ऑफ V secondary आ जाएगा V secondary minus 0.7, इन द फॉर्म ऑफ V out हो जाएगा V out plus 0.7। So this is the PIV value of the full wave diode. So here the bridge output, so bridge rectifier with transformer couple input as shown in the figure. During the first cycle of the total secondary voltage, the diode D1 due to its forward bias, in neglecting the diode drop, अगर इसको drop को हम neglect करें, mean ideal consider करें, secondary voltage appear across the load resistance will be same as true, Vp out is equal to V secondary, कि हमने पहला जो प्रूव कर दिया। अगर इसको मैं आइडियल कंसिडर ना करूँ, हम कंसिडर करें कि नहीं इसके अक्रॉस 0.7 वोल्ट हो सकती है, 0.7 ड्रॉप, तो फिर आपके साथ क्या हो जाएगा, तो आपके साथ आ जाएगा Vp out is equal to Vp secondary minus 1.4। If I want to calculate the PIV value, so अगर आप आइडियल कंसिडर करें तो PIV आपके साथ Vp out के बराबर होगा, अगर आप आइडियल कंसिडर ना करें तो Vp out is equal to Vp out plus 0.7, इसको मैंने अभी कैलकुलेट कर दिया। समझ आ गया? ये थ्योरी अभी आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या है, इसको मैंने आपके लिए कैलकुलेट कर दिया। सो लेट्स स्टार्ट दिस वर्क in our Node software. ये आप अगर पीसीबी लेआउट बनाना चाहते हैं, नहीं आपको शायद पीसीबी क्या पता होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको कोई ना कोई टीच करेगा कि व्हाट इज पीसीबी एंड हाउ यू विल कैलकुलेट पीसीबी। अगर बिल्कुल आपके साथ ये सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप फिर भी अपने आप से याद कर सकते हैं।
सो ये तो मैंने ओपन कर दिया अपना workspace. In this workspace, now I want to design a bridge rectifier. मैंने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है, इधर मैं लिख लूँगा वी साइन. यू नो व्हाट इज वी साइन. इस पर आप डबल क्लिक करें तब से इधर आ सकती है. इसके बाद आपने लिखना है ट्रांसफार्मर. ये क्या किया, डबल क्लिक करें ट्रांसफार्मर. इसके बाद आप लिख ली ब्रिज. डायरेक्ट आपके साथ ब्रिज आ सकते हैं. ठीक है, आप डाइवोड से भी बना सकते हैं और इधर डायरेक्ट भी आप यूज. मैं इसको यूज करता हूँ जेनेरिक. ठीक है, आप भी जेनेरिक यूज करिए जब भी आप ऐसी कैलकुलेशन करना चाहते हैं कि इसमें आप एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं डालना चाहते, आपके साथ कोई डाउट है नहीं है, तो आप जेनेरिक यूज करिए. ये इसके बाद मैं यूज करता हूँ रजिस्टर को, आर ई एस को. उसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ. ठीक है, मैंने भी साइन लिया इधर, मैंने ट्रांसफार्मर लिया इधर. इसके बाद मैंने लिया ब्रिज को इधर. इसके बाद मैंने रजिस्टर लिया इधर. इसको मैंने कर दिया एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जो भी आप करें. और इसकी वैल्यू आप कर दी 180 कर दी, 200 कर दी. और आर की जगह आप लिख सकते हैं आउटपुट. जब कनेक्शन बटिक तो वैसे है. ये जो पोर्शन है इसको एक को पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ. इसके बाद जो दूसरे पोर्शन बच गया इसको एक इधर कनेक्ट करें. या इस तरह करना चाहता था कि अच्छा लगे. ये खा ला रहा. ठीक है,
यहाँ तक आपको शायद क्लियर होगा। इसके बाद आपने उठानी है एक इस चीज़ को इसको आपने करनी है, ठीक है। इसको आपने करनी है इधर, ठीक है। ये तो मैंने इसके साथ ऑसिलोस्कोप उठाई है। अभी इसका थोड़ा सेटिंग करनी है। वो सेटिंग तो आपको मालूम है, एम्पलीट्यूड अभी तक हम यूज़ करते हैं 312 315 राउंड अबाउट। फ्रीक्वेंसी हम 50 हर्ट्ज यूज़ करते हैं अभी तक। इसको हम ओके करते हैं। और इसका हमने क्या करना था, वही सेम 4 मिली एम्पेयर मिली हेनरी ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम यूज़ करते, जो कि फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर से हम पढ़ के आ रहे हैं। ये हमने बना दिया। इसके बाद आपने कंट्रोल एस क्लिक करना है ताकि सेव हो। इसके बाद अगर आपने इसको रन करना है तो आप क्या करें, इस पर क्लिक करें। ये सबसे पहली सेटिंग आपने यहाँ से करनी है, ठीक है। जो भी हो आपके साथ ये, इसका अगर आप थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस तरह। इसको अगर आपने थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कहने का मतलब ये था कि यह के साथ एक दोनों वेव्स को क्या करते कन्वर्ट करते हैं डीसी पे। अभी इसमें ये जो ऊपर सेटिंग है इसको हम कमिंग लैब्स में ख़त्म करेंगे कि इसको कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का लैब। इस लैब में हमने फाइंड किया क्या चीज़ को, ये अब देख कर दिया कि ब्रिज रेक्टिफायर को हमने डिज़ाइन कर दिया, और इसके साथ साथ हमने अब इसका आउटपुट हमने ऑसिलोस्कोप पे, इनपुट और आउटपुट को हमने ऑसिलोस्कोप पे देख लिया। अच्छा, आप इस तरह करें कि इसको डिज़ाइन करें, फिर मेरे साथ स्क्रीन शेयर करें कि आपने कैसे किए। कोई फिर